वो अंदर चले जा। मेरे को खोल लेते। देखना एक मिनट। हाँ स्क्रीन पे दिख रही शायद। तूने देखा? लूट लिया। ओ ये कैसे खुलता? रेड कलर का नहीं खुलता, ग्रीन कलर के खुलते बस। नीचे मारने का ट्राई कर। इधर मेली अटैक। मेली अटैक। अच्छा ई से। ओके। ये This क्या is है the भाई? prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darbo out. वो साथ में करना पड़ता है Bypass the security so we can enter. भी नहीं इसमें तो। नहीं मिल जाता है वो, बस नीचे लिख के आता है। हैं? लॉक क्यों है? Search these cells for Darbo. He has to be here somewhere. I owe you for this demo. I will get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this mess. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there, alive. ओए 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 डार्बो मेरे पास है। तो अलाइव रखना है भाई। हाँ आ जा। The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. डार्बो टेलीपोर्ट करता है।
to give me influence. Shall we see how your shields work? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. डैमेज मत लेना भाई, फिर काम नहीं कर। आओ आओ इधर इधर किधर है? डार्वो की हेल्प है पूरा। इधर आओ। और क्या हो The गया? अरे captive has लेट्स been गो मजा। secured. You've done your part, Tenno. We'll take it from here. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Cephalon, a shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand. The Grenier are ravenous for this अपने ship old में है क्या? technology. हाँ, It हाँ। is superior to theirs. Install करते Perhaps segment there आ are जाए, systems बोल रहा है। left in the क्या करूं? orbiter compartment. Install segment। Look at this mess. Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life second. support. Why Two did the one-line operator compartment. abandon me? Arsenal management could be restored if the operator wishes it. अबे तू है ऑलरेडी स्क्वाड में। ते शिप मध्ये इन्व्हाइट अरे तू आहे ऑलरेडी। शिप मध्ये इधर तो जाने को बोल रहा है। इंस्टॉल सेगमेंट। You honor Ordis. Now I can supply the operator with better modded firepower. इंस्टॉल करते The violation. Those have been looted as well. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Ordis hopes the operator will leave punish the करूँगा Grenier for dismantling it. नहीं था। कैसे तू दिखा रहा है बट है नहीं। मेरे को लीव स्क्वाड का ऑप्शन आ रहा। क्या हुआ वैसे मेरे को? हाँ मैं कहीं तो ये कर सकता था। डैम बे स्किन्स तो मस्त लगता है। तुझे शिप मध्ये बोललो मला हो। बघ एस्केप दाबून माझ्या नावापासून भर तुझ्या स्क्वॉड मध्ये एस्केप दाबून वरती माझं नाव लिहिलं असेल पीयूटी लिहिलं असेल हाँ तो तुझं तिथे शो प्रोफाइल दाखवत आहे।
तू ऑलरेडी स्क्वॉड मध्ये आहे. तो आता खाली नाही आहे का इन्व्हाइट कर ऑर्बिटर? नाही नाही मला ऑप्शन येतं की लिव्हचं ऑप्शन येतं मला माझ्या सर पोस्ट लेफ्ट. आता मला इन्व्हाइट हां आता येईल साहेब. करेक्ट. जरा आता मला इन्व्हाइट पाठव ऑर्बिटर मध्ये. हां ऑर्बिटर म्हणजे तिची शिप आहे ना हो हो ऑर्बिटर. हां दे. करना है क्या चालू? क्या लगाऊं? इधर अर्थ है मार्स है. मेरे को समझ मी नहीं काय आता अपग्रेड नाही. क्या लगाऊं. हा अर्थ मध्ये जे मिशन आहे ना हां ते बघायला कोणतं वाला मॅरिना आहे मॅरियाना. जे उघडलेलं आहे ना लेफ्ट मध्ये. हे बघ वोट केलं का हा ठीक आहे. चालू करू. ते मी कंट्रोल करू शकतो याच्यात. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. काय करायचं ते तुला ऑप्शन तुला काय आहे ते मिशन मिशन काय आहे तुझं? माहीत नाही इकडे रेड सेमच असेल ना. एलिमिनेट आहे ना तुझं? माझा नो प्रॉब्लेम हा मिशन झाला आहे. मेरे को मिशन है एनिमी किल 35 उतना 35 मारना. अरे अरे लास्ट टाइम तेरे को वॉर को डिफेंड करो. उसको डिफेंड करने का प्रिजन को फाइंड करना उसको डिफेंड करना वो आ रहा था कि नहीं लास्ट टाइम मिशन केला ना आपण. हां हां त्याच्यामध्ये तुला ऑप्शन येत होते म्हणजे ते ऑब्जेक्टिव्ह होता ना तुझा की त्याला फाइंड करायचं आहे आपल्याला प्रिजनरला. हां त्याला शोधलं आपण आणि सेफली आणलं वापस. असं लिहून आला होता तुला म्हणजे नाही ऐकू गेलं मला. म्हणजे तुला असं लिहून आलं होतं काय एनिमी स्पीड? नाही नाही आता लिहून येतं पहिल्यांदा. मागच्या याच्यात ऑब्जेक्टिव्ह लिहून होता ना तुझ्या? मी पाहिलं लक्ष नाही दिलं. येलो कलरचा येत होता तुला? येल्लो ग्रीन काय होतं
ते चेक आपले काय म्हणतो वे पॉईंट रोज कलरची होती. काच आहे इकडे. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. त्या ग्रीन कलरचं पॉईंट येतं तुला हो हो. तर ये ना मग टूल आहे. मी चाललो खतम. हा, इथे एक- आणि मी तुला नेक्स्ट काय काय? When you are मिला ready, proceed to the navigation console. नेक्स्ट मिशन मिला अरे गेम बनवलं. मी स्टार्ट कर लिफ्ट करू का मी? नाही लेफ्ट का केलं मी स्पॉट लिफ्ट केला. आता त्या होम यही रहता क्या अपना? स्पेसशिप ही होम रहता क्या? हाँ. Just like that. इन्व्हाइट नाही येत आहे तुला You had a lawyer. वाला. अजून का नाही आलं? आता आलं. एस्केप दबून वोट कर दो अबे सिटिंग कैंसिल कर. कैंसिल हाँ कर डब्ल्यू दाब एकदा हां. एवढं जास्त आता तुला लिहून काय येतं लेफ्ट साइडला
लोकेट द फाउंड्री सेगमेंट. हा, ठीक आहे. सर दोघांना पेन आहे. नाही ते मागचं मला कदाचित तुला एलिमिनेट वाला तेव्हा दिसतं की जेव्हा I तू was afraid of this. ऑब्जेक्टिव्ह The Grineer are here, and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the foundry segment. This was once a prosperous, independent colony, until the Grineer arrived. कैसा ये? The Queens fear you, but I will show them. क्या था? Their love will return when I deliver you to them. मेरी एबिलिटी. मेरे को भी कुछ दिया उसने. To चार्ज are कर you दिया. there? The signal cannot be boosted any further. हाँ, तुझे पास है. You are running out of time. अबे अबे अबे. वो पहुंचा कैसे तू? Good. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do. Eliminate all Grineer and provide justice for the colonists. Soon the worm will be in your spine, and I will control this WarFrame of अरे yours. बारा मदद करी तर. I will purge your doting mother and bring you home. इतना दूर कैसे? हो गया क्या? अबे यार. इधर आए लोग.
कैसे जाना होंगे उधर? मैं इधर से इधर आउट कर गया हूँ। इधर आ। इधर आ। एक मिनट। थोड़ा सा रास्ता रुक दो। अच्छा इधर आ। चल चल एलिवेटर है, चल एलिवेटर। हो गया। सही। नहीं हुआ, हो गया होगा। इधर आ, इधर आ, दोनों को है। Another job well executed. किसी का कुछ भी स्टार्ट दिखा था? हम्म। देखो भी When you इंस्टॉलेशन are आएगा ready, कुछ। proceed to the navigation console. इंस्टॉल कर दे, कुछ आया होगा तो। क्या है? इंस्टॉल नहीं है? अरे तुला काही ऑब्जेक्टिव्ह दिसत नाही आहे तुझ्या शिप मध्ये? नाही, अरे ते कधी कधी येते, मला नाही आलाय सध्या. मेरे को अभी फिर से हो गया इनवाइट वाला ऑप्शन. नहीं नहीं मैं नींद आ रही, नींद कैसे आ रही? हेलो आहे ना? हो ना. एक सेकंड. क्या मतलब? जाईल. हां तुला आलं असेल बोट. वो है, हाँ. एस्केप द्या बघता.
Darvo's intel suggests that this outpost is host to several rich supply caches. Raid the caches and take what you need. This outpost belongs to the Corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grenier. Darvo will fill you in. Legions of robots, mindless automatons, freaking lasers. These guys are bad news, but they're also loaded, which is why you're here. Good. हेलो आया घूम गया ये दो क्यों आ रहे अभी दो चेक पॉइंट क्यों आ रहे ये दोनों जगह रेड कर क्या किया रेड करना है रेड पहले इधर से क्या हुआ बाप रे अबे इनको तो नहीं मारा जल्दी से ज़्यादा क्यों Keep moving. There is more here. Technically, this is stealing, but don't let that bother you. The Corpus aren't exactly beacons of moral fortitude either. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits. A lot. But I don't sell my wares to the damn Grenier. That's भाई ये रोबोट unforgivable. बहुत है इधर आ जा इधर आउट इधर पीछे पीछे था पीछे फ्रेंडली फायर है क्या
इधर आइयो। मेरे पे भी है। Good work, but you're not done yet. Find the next cache. You almost have what you need. Time for extraction. We want all you came for. The Ascaris has reached your mind and rendered your lotus mute. You will return to me over your own free will. अरे अरे दो घंटा खेलेंगे अपन। 2 बज गया। नहीं 2 घंटा खेलेंगे। एग्जैक्टली तो नहीं खेली थी। उधर लिख के है कि अचीवमेंट प्ले फॉर 2 आवर्स। When you are ready, proceed to the navigation console. I'm the dumbest girl alive. I took 10 pills today. I got pieces on my toes, plus I gave away my brain. I'm the dumbest girl alive. I got lightning in my veins.
आ जाओ ओ तो एक हो गया। अरे एक वेबसाइट देख, ये देख, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। देख व्हाट्सएप पे भेजा, देखो। The systems on this Grenier galleon can be made compatible with your ship. Find and extract a navigation segment. क्या है ये? ये वो कॉलेज का कल्चरल फेस्ट होने वाला है, हम ये वेबसाइट हम बनाए। You have murdered my son. तुम्हारे कॉलेज का Disgraced हम me बनाए, before my queen. वेबसाइट हम बनाए, ऐसा बोल रहे हैं। But soon, पूरा the Ascaris will मतलब टीम है complete साथ its में। task and bring you to me. मेरे को जो मॉडिफिकेशन किए पूरे स्क्रैच से बनाए। क्या क्या? पहले से वेबसाइट बनी नहीं, हुई थी, उसमें चेंजेस फुल स्क्रैच, वेबसाइट बनी नहीं थी। तो सही सकती है भाई। स्क्रॉल किया क्या होम पेज पे? हाँ देखा। अरे वो हमारे इधर डिज़ाइन ब्रांच है ना, वेबसाइट का डिज़ाइनिंग उन्होंने किया, फिर पूरा उन्होंने बनाया पूरा। 3 4 5 50 मोबाइल पर उगड़ ले कि लैपटॉप पर? हाँ मोबाइल पर उगड़ ले, लैपटॉप पर उगड़ ले। लैपटॉप Swagoroy, Axel. आला का गेम है। चल वो लूटा भी करो। क्या बच्चे ये बहुत। अबे अपने Double हेल्थ बहुत digits, ज़्यादा है, bro. क्योंकि अपन मरते ही नहीं। फिर वो होता है जब प्लेन चलते हैं एबिलिटी पण यूज करते हैं। हो करते ना कभी जो बम रख। अबे साहिल तेरी वायर्ड वाली ये फोन देना। क्या हाँ वायर वाले फोन चौधरी के लिए क्या ना क्या ये मतलब मैं मिलता है तुझे वायरलेस वाले आपको तो तुम ही इतने बंद पड़े।
क्या खाने जा रहे हो? हाँ एक ही फोन यार आवाज येते ना? इयरफोन चेंज करत आहे. अरे बाप रे Good work. We have what we... Wait. Tenno, coordinates in this nav segment put the galleon on a direct course to a convoy of colonists. You have a choice. You can extract now, or you can disable this galleon and save the colonists. Saving the colonists could jeopardize this mission. I recommend you head straight to extraction, but the choice is yours. कुछ हो रहा है तेरे को? The Ascaris failsafe is attacking the systems. Your shield capacity has just been halved. You're wasting precious time, Anna. माझा एक मित्र आहे कॉलेजचा. त्यांना बघितलं असेल डिस्कॉर्डवर की मी खेळत आहे. त्याने DM केलं मला कि बताना कभी खेलना है तो 1000 घंटे खेलना है. WarFrame भाई साहब 1000 घंटे भाई 1000 घंटे खूप आहे. अरे बेटा You've reached the ship's power systems. Destroy the reactor. Destroy the fuel injectors. अबे किधर? कुछ तो गलत दबाया भाई.
मेरी गन चली गई कैसे? गन कैसे जा सकती है? वही तो बोल रहा नहीं है मेरे हाथ में गन नहीं, गोलियां नहीं है शायद। गन चेंज भी नहीं करता रही मेरे को। अबे गन का क्यों आता? गन नहीं है क्या? ये बस का है। हैं? राइट क्लिक दबाओ तो नहीं रुको। The colonist ship has escaped. I admire your noble intentions, Tenno, but you must survive the future of the system. When you are ready, proceed to the navigation console. हेलो When you are ready, proceed to the navigation मैं console. सॉरी हेलो मैं सॉरी क्या हाल है? जोपत है तो पता है हाँ। ठीक। कल मैं खेल कल का दोपहर को फ्री है क्या? फ्री तो हूँ। ठीक आहे मग उद्या दुपारी सांग जेव्हा फ्री आहे. आगे का खेल लूँ मैं थोड़ा बहुत। हां आगे का खेल लेता हूँ। तू खेळत आहे का आता? थोड़ी ना फर्क नहीं The पड़ा। detonators शायद नाही पडत. to bring Vor नाही down. पडत शायद. He thinks he can capture you again. Don't worry, I will be with you. Let us show him how much you have learned. बाय. बाय। outside was Yeah, so basically, to be honest, like I had a lawyer, bro, before, and I didn't know any of this shit. Okay, I just googled a lawyer on Google. I just googled a lawyer, और फिर वो लॉयर को मैंने हायर किया एंड मेरे को लगा लाइक यू नो क्रिमिनल लॉयर ये सब लिखा है उसमें स्टार्स है बहुत सारे रिव्यूज अमेजिंग है बट दैट्स द लॉयर हु गॉट माय केस मेस्ड अप ब्रो कंप्लीटली फिर मैं अंदर गया एंड दैट लॉयर केम बैक that time he was filing my anticipatory. ये न्यूज़ में भी आया कि मेरा anticipatory फेल हुआ था because of which they arrested me. So I waited. This lawyer came inside and he's like, should we go for the court fight now? I was like, no man, like you know, straight up because अंदर जब भी मैं अंदर गया that's the main place to figure out lawyers कौन है top पे. यहाँ पे जो मेरा lawyer था उसका नाम है ही नहीं. I wouldn't like to take the name because like you know. So इसका नाम तो कोई जानती ही नहीं है ब्रो पब्लिक. बाद में मुझे पता चला कि ये डिंडोशी का लॉयर है. फिर मुझे पता चला कि डिंडोशी कोर्ट अलग है एंड लाइक सेशन कोर्ट अलग है NDPS. दैट्स व्हेन आई स्टार्ट. मैं तो डिंडोशी के कोर्ट में बिकॉज आई एम स्टेइंग अराउंड ब्रो. तो मेरा गूगल मेरे को डिंडोशी के कोर्ट का दिखा रहा है एंड डिंडोशी कोर्ट में लाइक ही इज फाइलिंग फॉर स्मॉल केसेस लाइक फ्रॉड 420. NDPS इज एन एक्ट ब्रो. यू नीड समबडी हु इज स्मार्ट इनफ टू नो द केस. So that's one mistake I made, and then after like staying in the prison for a month, I figured out 2-3 names that were like you know getting bails and doing the right thing. So I waited for a month to get a lawyer, and then I got a lawyer. तो ऐसे lawyers भी होंगे who have connections and who are like better like Saul Goodman. No, so it's like it's like education, bro. It's like education. You're in that field for like 15-20 years. That's a senior lawyer. That's a lawyer who knows the shit. That's a lawyer who knows what to read, what not to read. Because when they make a charge sheet is probably like 2,000-3,000 pages, bro. अपनी ऐसी पब्लिक तो मतलब पहले पेज में सर घूम के ऐसा फुल लास्ट We don't even read basic terms and conditions. Bro, these 300 pages I have read my charge sheet every day for 2 months. 300 like pages. if I was outside and like a friend of mine would have gone inside, I would have had the same reaction he has. Why the fuck would I read?
But when you're inside, and that's the only dream you have, that's the only thing that would probably you want. Yeah. A person like me who never reads, bro, ended up reading 3,000 pages every day for a month. Just because I'll tell you the story, like, ahead. But what were we talking about, bro? About lawyers and how Yeah, that yeah, yeah. helps. So in that whole process, अगर हम लोग यहाँ से अंदर से भी करते, lawyers भी बहुत scammers रहते हैं, bro. They know, like, they use your emotions. They play around. They tell you हो जाएगा bail. They don't know shit. They're not even NDPS lawyer, bro. वो रहेगा criminal lawyer रहेगा, या वो रहेगा 420 lawyer रहेगा, या कुछ अलग. But NDPS is a popping market. It's hot. Everybody's getting into NDPS. Fake cases बहुत बन रहे, cases बन रहे, पैसा बहुत है. Because everybody wants to get out because it's an act. Yeah. और अच्छे लोग celebrities फंस रहे. So that's why that field is becoming hot, bro. So anybody, कोई भी lawyer आके scam करता है कि बोलता है हाँ पुण्यातल्या स्टुडंट्स आणि बॅचलर्ससाठी रोजच्या जेवणाचं ठिकाण 10 स्पीकर तो टूट गया अभी तेरा एलबी स्टार्ट नहीं बच सकता सॉरी यार अरे मुझे तो असली का क्लियर ही तेरे सारे रंग लाडो पूछा है मन्ना क्यों तेरा English, take the straw. Urdu, yellow straw. Punjabi, astrology. English, take the straw. क्या होगा तो इस गाने में ओल्ड हनी सिंह का रैप हो लेट्स सी हाउ दिस गोस तो इस गाने में मेरा आवाज डालने के लिए वोकल्स और म्यूजिक को अलग करना पड़ेगा यो हनी सिंह गाने में एक खासियत थी कि उसकी रैप की शुरुआत होती थी यो हनी सिंह से अभी हनी पाजी का गाना है तो इसमें वैसे ही कुछ लिरिक्स लगेगी जैसे गिन्नी मेरी तेरा वेट करे हाई हिल्स लावा तेरे लिए और बस हमें हनी पाजी की तरह गाना है जैसे थोड़ा एरी और थोड़ा एग्रेशन वाले आवाज सुनो मेरे वीरों आज चिना मेरा नसीब प्यार हुण किते हो भी नहीं सकता एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो दिलों अखियां यो हनी सिंह मेरी आंखों में देखा कर बिल्लो रानी बस तेरी और मेरी चलती कहानी गिन्नी मेरी करे तेरा वेट पीछे बैठ जा हाई हिल्स लावा तेरे लिए मेरी निशानी आशिक नू ऐसे ना तरसाया कर साथ होने तो प्यार थोड़ा बरसाया कर तू मेरी डोर मैं तो तेरा यो तू नेड़े मेरे आके कस के लिपट जाया कर जा तेरे साथ जो हनी सिंह तो फिर क्या होगा
आजकल फिरंगियों को देखकर हर कोई इयररिंग्स पहन रहा है। वो लोग तो सिर्फ कूल बनने के लिए पहनते हैं। कर्ण विधि संस्कार जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के 16 मेजर संस्कारों में से एक है, जिसे बचपन में किया जाता है। और ये ऐसे 5 रीजन जिनको सुनकर अब ईयर पियर्सिंग जरूर करवाओगे। पहला, ईयर पियर्सिंग करवाने से मेंस का स्पर्म काउंट प्रोडक्शन बढ़ता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी हेल्दी और मेंटेन रहती है। दूसरा, बच्चों में ईयर पियर्सिंग करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर लॉब्स में ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो कि ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इस आयुर्वेद के हिसाब से जहाँ ईयर पियर्सिंग करवाई जाती है, वहाँ पे 2 ऐसे एसेंशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम्हारी प्रॉपर ईयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, ईयर पियर्सिंग करवाने से ओसीडी, नर्वसनेस और एंजाइटी जैसी चीजें बहुत हद तक कम हो जाती है, और यही चीज वेस्ट में ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से जानी जाती है। ईयर पियर्सिंग करवाने से आपका बॉडी का एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है, इससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है और बहुत हद तक ओबेसिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपको भी ईयर पियर्सिंग करवाना है, और अगर आप मेल हो तो आपको राइट ईयर में पहले कराना है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको लेफ्ट ईयर में पहले कराना है, क्योंकि राइट मैस्कुलिन है और लेफ्ट फेमाइन है। और भी ऐसी इंफॉर्मेशन I got these perfect colorful frames. क्या आपका भी बम इनकी तरह अंदर है और आप भी जींस पहनते तो आपकी भी जींस इनकी तरह सरक आती है, और इसकी वजह से आपको अपना बेल्ट टाइट बांधना पड़ता है। तो आपको अपने बम को बाहर निकालना है और एक अच्छा शेप देना है। तो करिए 3 आसान एक्सरसाइज। फर्स्ट है स्क्वाट, इसके आपको 3 सेट करने हैं 25-25 के, इससे आपके बम पे प्रेशर आएगा। सेकेंड है क्लोज लेग स्क्वाट, इससे आपका बम मजबूत होगा, और इसके लिए आपको 3 सेट करने हैं 25-25 के। और लास्ट है हिप थ्रस्ट, इससे आपका बम शेप में आएगा, इसके भी आपको 3 सेट करने हैं 20-20 के। क्या आपका भी बम इनकी तरह एक बार सारे इधर देखो, सारे इधर देखो। आज अभी यहाँ पे एक एक्ट होने वाला है, वो द गाय हु मेड आवर चाइल्डहुड मेमोरेबल। हनी बाजी लॉक कर पे फिर लॉक कर, फोन रख ले पर भूलिएगा उधर चार्जर, रिस्पेक्ट चार्जर, होल्ड ऑन Dick in a dike, dick in a waist, dick in the right places, hits like Venus. ये रात को 1:25 पे बजता है। आनंद शेकआउट ढाबा का ऑर्डर। दूर है यार 4 किलोमीटर। एक्सेप्ट। चलो आगे लोकेशन पे रीच लोकेशन रेडी बताना ऑर्डर को। भैया ऑर्डर पिक कर लियो। ऐसा एड्रेस तो देना। इसका बिल तो ऐसे 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर अंदर जाके पता चलता है, ओ फक, देयर इज कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, देयर इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें बेल भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हेन आई वेटेड फॉर अ मंथ, और 1 महीने के बाद आई फिगर्ड आउट एन अमेजिंग लॉयर, and by that time bro, it was crazy because even I started studying law inside.
Because like I told you, I was reading chart sheets, right? My main thing inside was because when I got inside, सबको पता चल गया था मैं आ रहा हूँ. तो ये पैसे का जो था कि like you know, for everything charge me an amount and shit. That was going on for a long time, bro. Long time like ये लोग मेरा इतना मतलब इतना मुश्किल कर दिया था कि वो लोग ने कॉप आके सीधा ऊपर बोल दिया कि इसके साथ कोई बैठेगा नहीं जब तक ये बिस्तर नहीं लेगा. और अगर बिस्तर नहीं ले रहे ना ब्रो, देन देयर करवट में वैसा टेढ़ा होके सोना पड़ता है जहाँ पे आजू बाजू सारी पब्लिक इन्फेक्टेड है ब्रो. इट्स लाइक यू कैन सी शिट ऑन देम. किसी का पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, कोई एकदम भलते वलते जगह से आया है, कोई कुछ करके बैठा है. यू हैव टू स्लीप इनसाइड एंड द पोजिशनिंग इज लाइक ऐसे हम लोग सीधा सोते हैं ना, वहाँ पे एक कंधे में एक पैर में आके सीधा ऐसा लेटना पड़ता है. एंड यू कांट मूव बिकॉज ऑलरेडी पीपल आर टचिंग यू. सब चिपके हुए. और वहाँ पे अगर रात में 7 घंटे की स्लीप में इफ़ यू मूव एंड यू टच समबडी और उसने देख लिया तो वहाँ पे सीधा ब्लेड वेड निकलता था ब्रो. तो आधे मैंने लोगों को अंदर केसेस बनाते हुए देखे. 302, 307. 302 क्या है? 302 full murder. 307 is half murder. Fuck. You've seen people kill each other in... Yeah, bro. Bro, people have died inside because of food poisoning. People have committed suicide because they saw, oh fuck, like session से high court जाने में 1-2 साल लग रहे. And very sadly, like you know, in these acts, so I'll tell you, like if you do some like छोटी मोटी चोरी या road पे fight होता है ना, all these acts they work with parity. So parity is like daya khana. Okay, but when you are like in an act that's like NIA, NDPS, TADA, Makoka, parity is of no use. So people who've been stuck inside for all these acts, they've seen their whole family die, bro. And they couldn't get out. Like you know, it's fucked up. So acts, if you get fucked, it's the worst. बाकी छोटे मोटे केसेस में चोरी वोरी किया है, फैमिली को like somebody has cancer and shit, easily medical grounds पे you get out, you get a bail. But when you are in these acts, you don't get bail, bro. Because there is like direct, क्योंकि from the outside it's like you are doing something disservice to all of society instead of just one person. Yeah, NDPS the acts are like Deshdrohi, terrorist, TADA is terrorist act, Makoka is gangster. So all these acts say that you're against the nation, bro. Yeah. So that's why उसमें जो complications और rules है that are very different from what a normal thing जैसे like you know robbery, मारामारी, चोरी is very different. Even I figured I didn't know any of this shit, bro. But when you're staying inside a prison, library is like the cases. You know, all these books are like the cases of all these people, and you understand the mentality of a judge. पढ़ते because I used to start like my friends I made there, they were getting bail from the jail. So जब भी bail होती थी public सीधा अपने like letters are allowed, right? So we would tell them bail हुआ, तेरा order copy ले और order copy को post मार अंदर. By reading that we would understand like me and my friends कि judge का mentality क्या है, okay क्या grounds पे bail मिला है. ऐसे करके एक पॉइंट पे मुझे लॉ धीरे धीरे समझ में आने लगा. फिर मेरे दोस्त से जिसके NDPS बुक था, I took that book, I started studying, bro, and people thought I'm crazy, like you know what I'm doing inside the prison, but I didn't want to get comfortable in the prison, feeling like okay I had to spend some time here and get out. No, bro, I just wanted to figure out any ways and get out, bro, because public परेशान कर रही थी. Gangsters would come up to me, like gangsters, like all these people with Makoka and all that shit. They would come up to me and be like मेरे सामने रैप कर. राड़ा वो लोगों को किसी ने बोल दिया कि बहुत फेमस है, तो गैंगस्टर के सामने 1 महीने का तो मेरा रूटीन था, ब्रो. सुबह उठ के जोड़ी जब भी खत्म हो रही है, मैं नीचे जाके खाली राड़ा ब्रो. ऐसा सीन हो गया कि 2-3 दिन बाद इतना राड़ा कर दिया मेरे सपने में, ब्रो. मैं खुद के लिए गा रहा हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ, लाइक ऐसा फुल एकदम स्ट्रेस बिल्डअप हो गया था. ये उसके बाद मेरे को पब्लिक पूछती थी राड़ा है, मैं बोलता ब्रो मैं रैप ही छोड़ दिया. बुक लेके कभी भी अगर लिखने का है तो ब्रो देयर इज लाइक 50 पीपल अराउंड यू. ये भाई क्या लिखा है उधर से, कुछ समझ में वो लोग कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्रो. बट उनको भी तो चाहिए कुछ तो एंटरटेनमेंट, कुछ तो लाइक देयर इज एन आर्टिस्ट, ब्रो. दैट्स द वर्स्ट. इफ यू लाइक somebody people know outside, you have some numbers or like you're an artist or anything, YouTuber, and you get inside, bro, you're fucked. You're like a museum art, मतलब वो लोग के लिए आर्ट. और वो लोग ऐसे लोग हैं जो आर्ट पे कैसा पैसा दे के हम लोग कैसे दूर से देखते हैं ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वो सब पर्दे वर्दे खोल के अंदर घुस के छू के तोड़ के देखते हैं. ऐसी पब्लिक है, ब्रो. And they are hardcore criminals. You can't like you know you can't be like hey don't fuck around with me, I'll like tell somebody. You can't do the shit that you know we do outside. It's very different inside. But what is the form of entertainment like? Form of entertainment? The form of entertainment is like this. One form एक मैं था, दूसरा फिर जेल लूडो है, bro.
Jail ludo. Yeah, so like जब भी public का bail होता है, there's a thing in jail like if you get bail, leave everything that you have here. Your clothes and everything. So जिसका white t-shirt रहता है उसको फाड़ के जो आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग उसमें लूडो का पूरा प्रिंट बना के जो बटन रहता है उसको डाइस बना के वहाँ पे. And these ludos are not just general ludos, they're jail ludos. इसमें ऐसे रूल्स है जो यहाँ के पब्लिक अगर सुनेगी फ्लिप हो जाएगी. And the currency betting तो full power चालू रहती है bro. Currency is like BDs and cigarettes. और अगर गलती से किसी ने पैसा का हिसाब दे दिया और वो टाइम पे पैसा नहीं आया तो अंदर उसका गेम bro. So this is like gambling. Bro, whole IPL I have been inside the prison bro. मेरे सामने तो रोज एक टाइम पे इतना मेरा full ये like I was mind fucked bro to a point क्योंकि यही देख रहा हूँ ना. So मैंने भी 1-2 बीड़ी के बंडल उठाए टाइम पास के लिए. I also started like putting went to the BDs. casino. Yeah, I went to the casino bro. He sat at the table with his chips. And this casino is not just with like Indian people. The interesting part is there's Nigerians, all these people from like custom cases. ये लोग भी betting कर रहे. And you're wondering like oh fuck. अपने को भी करना ही चाहिए because like Nigerians are like so interested like you know to play that game and like Indian फिर there's some Spanish Mexican they are like watching cricket like वो लोग जैसे घर पे फुटबॉल देखते हैं bro. मेसी वैसी विराट कोहली चिल्ला रहे ये चिल्ला रहे अनुष्का बाबा अनुष्का. Oh okay man. There's foreigners in jail. Obviously bro there's custom cases. No I thought they sent them back. No यहीं पे डिपोर्ट का तो अपने को इधर अपन bro in this like city no whatever we know about the law is like just rumors bro. कुछ नहीं पता anything कि अरे फूका पकड़ा तो चले जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है bro. फूकने में भी वैसे ही cases है. It's like there are people in there for smoking. Yeah bro minimum quantity 1-2 ग्राम के लिए पब्लिक अंदर है bro. जिसके ऊपर माल भी नहीं है सस्पेशन में वो भी अंदर है. अभी फिर उसमें अंदर चले गए तो देन आफ्टर दैट लाइक यू नो द इट्स अप टू द कोर्ट. प्रोसेस इज लॉन्ग ब्रो. देयर इज पेंडिंग केसेस गया. अगर निकलने वाला भी केस है अगले दिन वो बेल अगले दिन वाला बेल भी इट गोज अप टू लाइक 2-3 months ब्रो. ऐसा मेरा था. was supposed to be out in like the next day but 2-3 महीना मेरा भी खींच के चला गया. Fuck bhai. In the Ludo thing you're talking about वो music video में भी yeah that's I couldn't do like full justice क्योंकि मैंने देखा अंदर but yeah definitely people like it but वो और ज़्यादा intense था bro. वो पूरा जो space था जो अंदर चीज़ें हो रही थी वो और dark था bro. ये फिर भी अच्छा लग रहा है अच्छा music. This is extreme bro. This is Ludo like थोड़ा extreme. वो music video में like we saw it together that day और मतलब it didn't look nice obviously that was also थोड़ा hard to watch. Yes and बहुत अलग है जो इसके पहले music videos आए. It was a whole so I was always telling my stories bro but like you know that time people didn't know what I was doing. So that time there was a different scene. I was living my life in a different condition but just because people didn't know about it तो लोगों को लगता था कि खाली ऐसा रैप है. Till date it's been like that bro. I haven't changed. My music has always been about the journey that like I have lived right now just because the story is like out और पब्लिक को ऐसा न्यूज़ में पता है ये चालू है बट इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट ब्रो. ओके शॉर्ट देखेगा ट्रू स्टोरी. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड शॉर्ट देखेगा. शॉर्ट देखेगा इज सब इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रो. लाइक यू नो आई वुड हियर ऑल माय फ्रेंड्स ब्रो लाइक यू नो बैक इन द टाइम like at that time probably they were into like you know scoring shit and shit. तो वो लोग बहुत people around like you know they would just give the money. I mean take the money, never give the bags bro. Probably गाड़ी वाड़ी में गायब हो रही है ये तो वहाँ से चालू अरे शॉट देके गायब हो गया. That's how it was. I thought some women are involved in this. हाँ नहीं हाँ मतलब ऐसे पब्लिक की फिर like you know theories लगती रहती है. So yeah it's something like वैसी सीन था. वो गाना बहुत उसमें धवल का वर्स भी. Yeah so me and Dhaval have something like coming back. Oh shit. In my album bro. तो वहाँ पे आने वाला है कुछ तुम लोग. हाँ मैंने स्टोरी देखा था उस दिन. Yeah. Devil was like shot देखेगा part 2. Who was that little kid bro with the blue hair and so Ali is like I don't know bro like honestly he's a skateboarder. All I know he's a cool kid bro. Yeah. He's amazing. Yeah. We took him in the video and he was like already doing some of tricks and some things on like Instagram. उसकी एक टीम भी है और फिर बाद में जब भी अली आया and like मैं उसको जानता करते भाई चार एक था वो भाई यार जिससे तो मैं एक दिन फूंक रहा था मेरे को टीटे की याद आ गई पर टीटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मेरे को टीटे को बनाना पड़ा कि मैं उसे याद कर सकूं. और पीछे बैठा वो फूकने तो टीटे के नाम के जोड़े चलते गहराइयों में याद करते भाई चार एक
Viraj, what are your thoughts on ISO speed coming to India? So very amusing, right? Picture this. ISO speed, 18-year-old kid, born and raised in the US, probably knows nothing about cricket. But what he knows is how to milk the internet and social media. What do I mean? Have you looked at the comment section of Mr. Beast, the Israeli Prime Minister, BTS, 9gag, Manchester United? Very random set of pop culture icons and brands, right? What's one commonality between all of these guys? Most of the commenters on these pages are all Indians. Now, why is that? Purely by virtue of numbers. We're 1.5 billion people, with 50% people having access to internet, thanks to Jio, one of world's cheapest data rates ever. Because of this, celebrities, brands, pop culture icons, creators, they're all going to the back end of their YouTube analytics, their Instagram analytics, their Twitter analytics, and understanding that India is maybe the number 1, number 2, number 3, or number 4 country in their demographics, which means they need to cater to India more. And that is why you have a Tottenham Hotspurs wishing Happy Diwali to Indians. You have Killy Paul dancing to Indian songs. You have JB Kuwe reviewing Indian movies. And you have Aisho Speed randomly falling in love with Virat Kohli. Indian internet and internet in general is not saturated at all. Stop giving your excuses. Now is the time to pick up your camera and start making content. था कि हाँ ये अली है, छोटा बच्चा है, लाइक यू नो. और वो जब इस हम लोग के वीडियो में उतरा ब्रो, मैं देख रहा हूँ पब्लिक उसको फोटो खिंचाने के लिए आ रही है. बोले ये क्या सीन है, लाइक एक छोटा सा बच्चा है, 11-12 साल का रहेगा और पब्लिक आके फोटो खिंचा ली है, लड़कियाँ आ रही है एंड दे आर लाइक यू नो गोइंग क्रेजी. दैट्स व्हेन आई फिगर्ड आउट दिस गाय इज लाइक बिग इन लाइक द किड्स. जो बच्चों का स्केटबोर्ड रहता है उसमें बहुत बड़ा है. He's big in the kids. Yeah, he's like a big thing. उनका भी अलग ही दुनिया है, मतलब we don't know this shit. Yeah, bro. He had his hair colored blue and all. I was like fucking crazy shit, bro. Fancy. Respect, bro. Blue hair. 11-12 साल में. हम क्या कर रहे थे ब्रो वो टाइम पे? हम लोग ब्रो 11-12 साल पे वो आई थिंक तभी वो पोकेमोन का जोन चालू था शायद. नहीं वो उससे भी पहले. वो तो बहुत लेट आया. वो बहुत लेट. टैजो ब्रो. टैजो we used to play with. अरे वो चीटोस वीडियोस में आते हैं तो ऐसा फेंकते थे. वो सब चालू था ब्रो. How old are you now? 28 bro. September I turned 28. Okay. How old are you guys? 25. Oh fuck. काम 25 हो गया तुम लोग. हो गया. Growing up now भाई. But you grew up in Bombay only? Yeah. Whole life I've been in Bombay. Yeah, there were some difficulties with my parents as a child. तो मेरे को hostel में थोड़ा पंचगनी में रखा था थोड़ा टाइम के लिए. वो same school. Which school? Yeah, actually, yeah. That's the only school I know in Panchgani. It's actually the same. Why वो तो flex है अभी. I went to the Tare Zameen school. Yeah, it's good. At that time it was pretty good, but अभी तो मैं गया नहीं वापस बहुत टाइम से. But yeah, I changed like 4 hostels there also, bro. I was in Shalom, New Era, then there's Billabong, some other because I had honestly at that time like मेरा स्कूल में भी बाहर से पब्लिक आई थी. कोई यूएसए से आया था रायन में, लाइक कोई दुबई से आया था, और वो लोग ऐसे सब एक कल्चर था रैप का. तो हम लोग स्कूल के टाइम पे ही बेसमेंट में जाते थे. और तभी लाइक यू नो इट वाज दैट ब्लूटूथ एंड कंप्यूटर और क्या टोरेंट चालू था ना वो टाइम पे. वो टाइम पे एमिनेम वाज पॉपिंग, सो लाइक यू नो लिसनिंग टू दोस ओ सुपरमैन एंड ऑल दैट शिट. सो वी गॉट इंस्पायर्ड एंड बेसमेंट में हम लोग जाके कुछ भलता ही फ्री स्टाइल, मतलब ऐसा फ्री स्टाइल हम लोग को लगता था डोप है. But like आज समझ में आ रहा है like, you know. But it's just something that probably got us excited and you know started somewhere, bro. We used to wear those like loose pants, big t-shirt, 50 cent का वो chain जो था वो, फिर cap and all that shit. And you're a schoolboy and doing all these kind of shit. You go outside, you're funny to the world, bro. But you think like you're but cool. But in your world, you're a star. You look like Ali. Yeah. I was too much into my world at that time, bro. हाँ but वो hip hop का तो वही है ना, it's not just music. Yeah, it's a whole drip, bro. It's a lifestyle. Yeah. It's a culture. Yeah. तो then you started writing and then. No, I never started writing at that time, bro. No. वो टाइम पे मैं फ्री स्टाइल ज़्यादा करता था, और जो रैपर्स के रैप है, फॉर मी टू लाइक इवन रैप इन इंग्लिश एट दैट पेस एंड अंडरस्टैंड दोज